forces should be united to defeat fascism. So that is our. स्वतंत्रता ट्रेड यूनियन के साथ अन्य कोई भी और भी जो संगठन है वो भी आए हैं क्या? आप लोगों का समर्थन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं? Please. INTUC, सर अपने परिचय के साथ। I am Zafrullah Mullah, National General Secretary, STU. सर आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्वतंत्रता ट्रेड यूनियन पूरे बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं मीटिंग करता है, Yes. तो आज भी इन लोगों की मीटिंग हुई है, क्या इसमें और भी संगठनों का समर्थन रहा है? yes. इंटैक्ट, C2, INTUC, दिल्ली उसका जो कार्यकर्ता है वो लोग पार्लियामेंट मार्च को समर्थन सपोर्ट करके ये मंच में थे। हो सकता है आपको ये है नहीं, लेकिन वो लोग भी थे। शहनवाज यहाँ पर तकरीर किया। Actually, we are with the supports of all the related trade unions, those who are fighting for the common cause of the working class. And my national president already dictated you before the policy program demand for which we have already gathered here. We want to believe a united confederation and movement throughout the country, because fascism is raised their hands and they are capturing everywhere through the easy trade and everything. We are boldly protest and to combat the fascism. Already the regime of the Narendra Modi everywhere. We will not tolerate anything in the name of Hinduism. Hinduism and Hindustan is not the same things and a separate ideology. As per constitution, for our legitimate demand, until unless we can save the working class throughout the country, we cannot save our state. सर लगातार जो है आप लोग धरने करते हैं, क्या आज भी आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है, तो क्या और भी आगे? For the years, we will go for the further movement everywhere, every sector, with the worker or working peoples, both organized and unorganized sector. As far as practicable, so far we can provide our peoples through the democratic movements. We are go throughout the country. In continuous till it will have to be success over there. As our Kishak say agriculture bill that is going to be withdrawn by the central government due to the constant pressures of the workers, peoples from mainly majority from Punjab state. You see, since a long time they have already demonstrated before Delhi and before the central administration to withdraw this anti-people's bill on issue of the agriculture. This is why it is the success. Without any democratic movements, nothing can be achieved over there. We do believe in a democratic movements, so this is why we do believe be united demonstrations and movements throughout the country. Thank you. जंतर मंतर पर आने का उद्देश्य क्या है? Yes, I am Advocate Rahmatullah, National President of Swatantra Trade Union STU, which is now working in 10 states of our country. This organization, which is originated in Kerala in 1957, now we have spreaded our work almost in all states of our country. The main demand of this Parliament March is save nation and safe labor. That you know, our country is facing a very severe situation of fascism. So, corporate communal forces, they are joining together and they are leading our country to fascism. For that, they are curtailing the rights of workers, farmers and common people. Make business easy, doing business easy. They are saying that the main objection for that condition is the benefits that getting by the workers. So that they are taking away the benefits of workers by implementing or codifying this labor codes, 29 labor codes into 4. So this campaign is against the anti-people,
anti-labor policies of Modi's government. ठीक जी, आज यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर आए और अगर हम बात करें पूरे राज्यों की यहाँ आवाज़ उठाई जा रही है, तो ये किससे मांग कर रहे और क्या मांग आप लोगों की? अभी तक तो आप देखा मेरा मांग है सारे हिंदुस्तान आज़ाद कंट्री को अगर आगे बढ़ाना है तो मोदी जी जो स्लोगान उठाया, नारा लगाया, वो पूरा झूठ है। सबसे पहले और वर्कर लोग ने जितना भी कितियों किसान सेक्टर ऑनररी सेक्टर में हो सकता है वो उन्हीं लोगों ने तमाम वेतन के लिए वो कुर्बान देता है, अपना जान, अपना माल, अपना सब कुछ, अपना खून बहाते हैं। वही है हमारा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा मुद्दा। अगर वो आगे बढ़े तब भी कंट्री आगे बढ़े, अगर वो पीछे हट जाए, ख़त्म हो चुके तो कंट्री ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसका नारा के नाते वो जो बोल सकता है उसका खिलाफ से हम लोग आवाज़ उठाया। जैसा मेरा प्रेसिडेंट ने आपको बोला, ये हमारा पुकार ये है कि अगर दुनिया के मजदूर को बचाओ, उसका साथ देश को बचाओ। अगर मजदूर नहीं बच सके तो देश एकदम वतन तबाह हो जाएगा। ये मेरा डिमांड है। जिस तरह आपने आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए वे झूठे किए, तो क्या अब आपको लग रहा है श्रमिक और जितना के खिलाफ से वो बोल रहा है, वो लोग हमारा डेवलपमेंट चाहता नहीं, लेकिन ऑल द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज इज completely depend on the laborers actually on their shoulders. Civilization at every stage you see throughout the country what we are doing for our developing, for our development, any sorts of activities, infrastructure, it is completely due to possible for the greater victory and cause and concerns of the labor class. So this is why it is our earnest duty, every countryman's duty, this is our citizens' duty to save the laborers without any safe policy of the laborers, and this class country cannot be saved over there at any cost. Okay. Okay, thank you.